सर, दीगर स्टाफ मेंबर, हमारे यहाँ क्लस्टर के स्कूल से आए हुए ज़ियाउर रहमान साहब और अजीज तुलबा और तालिबात। वैसे तो आप लोग अक्सर प्रोग्राम्स के बारे में सुनते ही रहते हो कि आज किस किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं, जैसा कि ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में, वर्ल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इस तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स आपके यहाँ स्कूल में मुनक्किद होते ही रहते हैं। तो उसी सिलसिले की आज ये कड़ी है जिसमें आज वुमेन एम्पावरमेंट, यानी खवातीन को किस तरह से बाअख्तियार बनाया जाए, वो प्रोग्राम इस वक्त मुनक्किद किया जा रहा है। और मुनासबत से वो अपने खसूसी कलिमात आप लोगों के सामने रखें, उसके बाद बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू होगा। वर्दी प्रिंसिपल साहब। मुझे स्पीच भी करनी है क्योंकि आपके सामने लिखा गया है कि प्रोग्राम जो है वुमेन एम्पावरमेंट। इसका मतलब ये है कि वुमेन को बाअख्तियार बनाना, ये हो गया हमारी मूवमेंट। लेकिन उसका दूसरा पहलू अगर ले लें कि आज की डेट में वुमेन कितनी एम्पावर्ड हैं या एम्पावर्ड हो चुकी है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अभी जैसे इन्होंने नाम लिया, किस तरह जब वो बोलती है तो पता चलता है कि वाकया कोई शेरनी की तरह बोलती है। इसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये हो गया कि आप कितने एम्पावर्ड हैं, और जिस जगह पे आपको दबाया जाता हो, कहीं एडमिशन के सिलसिले में, कहीं एजुकेशन के सिलसिले में, या समाज में कहीं आपके साथ ज्यादती होती हो, उस ज्यादती को दूर करना, या आपके जो क्या कहते हैं तरक्की के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको दूर करना, मेरे ख्याल से दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। तो इस पर मैं ज़्यादा तकलीफ नहीं करूँगा क्योंकि टाइम भी कम है। आपका एक तो इन्होंने कोई दो चार बच्चों का नाम लिख के रखा हुआ है, जिन्होंने बोलना है वो बोलेंगे, हम सुनेंगे, देखते हैं वो क्या सुनाते हैं हमें। फिर छोटा सा क्विज कंपटीशन होगा। तो मैं रियाज साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगले हफ्ते फिर आएँ, ठीक है। 15 अगस्त हो जाएगा, ये पूरा महीना ही ये एक्टिविटीज़ का है, ठीक है। कोई ना कोई एक्टिविटी जो हम करते रहेंगे, और इससे जब हमारा इंटरेक्शन होता है ना, आपसे आमने सामने हम बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दिस वर्ड स्टार्ट गवर्नमेंट पे। तो इस सिलसिले की एक पहली कड़ी है जिसमें हमारे मुल्क में चंद औरतें भी ऐसी शख्सियत रखती हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत अहम रोल अदा किया है। तो उसी सिलसिले में तकारीर का एक सिलसिला है जिसमें 3 तकारीर पेश करेंगी। एक है हमारे पास साहिबा अफजल, सिमाब जबीर और अमेरा यूनुस। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा साहिबा अफजल को कि वो स्टेज बनाए। और with many comparable women who are ideal in every sense, courageous, compassionate, intelligent and inspiring. Today I would like to speak about some of these iconic women who represent the strength and spirit of our nation. Rani Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi, is a symbol of bravery and patriotism. She led her army against the British during the 1857 revolt. Her courage, leadership and sacrifice made her one of the most respected women in Indian history. Mother Teresa, though not born in India, dedicated her life to serving the poor and sick in Kolkata. She received the Nobel Peace Prize for her tireless work and is remembered for her boundless compassion. She proved that an ideal woman is one who serves others selflessly. Kalpana Chawla, the first Indian-born woman to travel to space, showed us that no dream is too big. Her life story, from a small town in Haryana to the stars, proves that with hard work and vision, Indian women can achieve anything. Dr. Kiran Bedi, India's first woman IPS officer, broke gender barriers and led with honesty and fearlessness. She reformed prisons,
fought corruption, and stood for justice. Kalpana Chawla, Kiran Bedi, Indira Gandhi, Sudha Murthy, and Tessie Thomas represent different walks of life and served their country with dedication. They remind us that being an ideal woman does not mean being perfect. It means being strong, kind, hardworking, and true to one's values. Let us celebrate these inspiring Indian women and follow in their footsteps. Thank you. Good afternoon to everyone. As the day is celebrated as Women Empowerment Day, keeping in view I am throwing light on contribution made by Sudhamarti for women empowerment. Sudhamarti, a woman of simplicity and service. Sudhamarti is one of the finest examples of an ideal Indian woman, an engineer, teacher, author, and philanthropist. She is known for her simplicity, humility, and service to society. She is the chairperson of the Emphasis Foundation. Privilege. Sudhamarti broke barriers in her early life when she became the first woman engineer to children and adults alike. Her stories are simple yet full of deep meaning and life values. What makes her truly ideal is not just her success, but her commitment to service. She believes in giving back to society through education, healthcare, and rural development. Her life is perfect balance of intellect, kindness, and simplicity. She once हालात जिंदगी के बारे में बता रही थी, उन्होंने क्या रोल अदा किया। तो उसके बाद में स्पीच के इस सिलसिले के आखिर में हमारा यूनुस को दावत देता हूँ। मिस हमारा यूनुस। Nodal officers, teachers and students, first of all, good afternoon everyone. As the day is celebrated as Women Empowerment Day, keeping in view I am throwing light on contribution made by Mrs. Indira Gandhi for women empowerment. Indira Gandhi, India's first and only woman Prime Minister, is one of the most ideal women in Indian history. Known as the Ideal Lady of India, she led the nation with courage and bold decisions during challenging times, including the 1971 war that resulted in the creation of Bangladesh. Her leadership, determination, and political strength proved that women could hold the highest office in the country and the world. Indira Gandhi believed in serving the nation with discipline and dignity. Despite criticism and political pressure, she remained focused on the country's development and security. Her boldness, dedication, and leadership qualities made her a powerful role model for women in politics. She once said, "You cannot shake hands with a clenched fist." Her focus on peace and readiness legacy. She inspired millions of women to dream beyond traditional boundaries and believe in the abilities. तो अब मैं इस प्रोग्राम के जो नोडल ऑफिसर हैं जियाउर रहमान सर, वो आपको इसी दिन के मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पर कुछ एक्टिविटीज करवाएंगे। जियाउर रहमान सर। Faculty member and dear students. First of all, I would like to introduce myself as I am nominated as a Zonal Nodal Officer for carrying out different activities that run over a month, particularly the month of August, under the nationwide campaign of celebrating the National Constitutional Day, as well as also celebrating the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Under this national campaign, different activities are performed in different institutions of Zone Manjagut. Due to some unavoidable circumstances and some unfortunate incidents, we could not carry out the certain activities which are scheduled earlier. But today, with the active cooperation of the cluster head and with full hearty cooperation of the staff
of High School Delhi Road, and within a very short notice, I also congratulate the students who participate with different activities, particularly those who speaker. Within a very short time, they expressed their views regarding women empowerment, women emancipations. So I really congratulate all the students as well as the staff member of this esteemed institution. So regarding these events, actually this events is not a speech oriented, actually this is activity based. For this, before going to some type of activities, I would like to say that the women are nowhere inferior to the men. ठीक है, बहुत अच्छा, अभी बोलो। कोई भी स्टूडेंट्स इसके बारे में कोई एक लाइन या 2 लाइन बोले, मतलब इसकी पर्सनैलिटी के बारे में। कौन है? इंदिरा गांधी है। Indira Gandhi, India's first and This is Indira Gandhi, the first women prime minister of India. In fact, her father was the first prime minister of India. इतना ही, इसके बाद इसके एसोसिएटेड है, इसके तारीफ इसके पापा जो